Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. This video lecture is from Future Concern Grammar School on the topic of English grammar. Today we will be discussing the use of this and that. आज हम आपको बताएंगे कि this और that को कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं. Now let's start with the use of this. We use this to show a single person, place, animal or thing which is near to us. यानी जो वाहिद चीज़ हमारे सामने या आसपास होती है उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ दैट. वी यूज़ दैट टू शो अ सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग विच इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस. यानी जो वाहिद चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट मैंगो इज़ नियर टू हिम, सो वी विल यूज़ this, and the other mango is far away from him, so we will use that. Here is another example. The first ball is near to him, so we will use this, and the other ball is far away from him, so we will use that. Now let's try to make sentences using this and that. The first ice cream is nearby him, so he will use this. This is an ice cream. The other ice cream is far away from him, so he will use that. That is an ice cream. Here is another example. Cat. The cat is nearby him, so he will use this. This is a cat. And the dog is far away from him, so we will use that. That is a dog. That's all for today. I hope you have understood the concept of this and that. Take care of yourself. Allah Hafiz. मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए FC स्कूल सरगोदा के नाम से मौजूद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके. शुक्रिया.